Good morning, students. In the last class, I have given a problem. Now, optimize z is equal to minus 10x1 plus 2x2 subject to minus x1 plus x2 greater than equal to minus 1, x1 plus x2 less than equal to 6 and x2 less than equal to 5 greater than equal to 0. This is the question I have given to you. Okay. So इठी तमर जो क्वेश्चन टा इठी तीनटा कंस्ट्रेंट अछि एंड वन थिंग हियर ऑप्टिमाइज कहि जोटे ऑप्टिमाइज कहिथिबो सेटे बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम यदि बाहर थबो दीटा जगह बाहर करियो यदि खाली मैक्सिमम बाहर थि मैक्सिमम बाहर करि लिखि दबा खाली मिनिमम बाहर थि मिनिमम बाहर करि लिखि दबा यदि बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम बाहरिबो यदि ऑप्टिमाइज अछि ताले हमें दीटा जगह लिखिबा. ओके गॉट इट बुझिला. This is the question. As we know, solution to start with changing the inequations of the constraints to equation and solving it. Okay. अब सॉल्व कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल एटा नाउ द क्वेश्चन इज द माइनस टा गोटे रही जाई माइनस x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 1 x2 इज इक्वल टू एटा आर बुट को नेले x1 माइनस 1 एंड द टेबल विल बी गोटे आम माइनस नहीं परिवा बट नॉन चलो विल टेक माइनस x1 आम 0 नेले माइनस 1 आसी x1 1 नेले एटा 0 आसी. सपोज समवन विल से दैट सर मु x1 टा 2 नेबी ताले x2 टा 1 आसीबो एटा भी हमें करि परिया 2 1 यदि हमें पॉजिटिव नवा पे चाहते. सेकंड टा x1 प्लस x2 लेस देन 6 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6 x1 इज इक्वल टू 6 माइनस x2 एंड द टेबल इज x1 x2 6 0 0 6 एंड थर्ड वन x2 लेस देन 5 that is x2 is equal to 5. एटा टेबल किछि आवश्यकता नै सीधा सीधा लाइन टा टना हबो. ओके गॉट इट. राइट डाउन नाउ. एठी देखो मु दी प्रकार नै परबी 0 माइनस 1 नै परबी मुझे 2 1 नै छै. ओके इस प्रॉब्लम नै प्रेफरेबली हमें पॉजिटिव ही नबा. ओके 2 1 1 0 6 0 0 6 and x2 is equal to 5. Then origin test. Now putting the value of origin in the first equation. कौन को देखो 0 plus 0 is greater than minus 1. True or false? 0 is always greater than minus 1. 0 ta minus 1 ru bodo. So it is true. Okay. Second, 0 plus 0 less than 6. It be true. Remember, it confusion हुआ पिला माने जे 0 टा हमरो एठी
ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ओके ये -1 अच्छी से ट्रू है एंड थर्ड तो इक्वेशन ही नहीं x2 is less than 6 which is also true therefore the shading of all three towards origin है तीनटा जाक टुवर्ड्स ओरिजिन ही हम ओके बुझा पड़ा बर्तमान ये ट्रू है एटा भी ट्रू है एटा भी ट्रू है तीनटा जाक जेहेतु ट्रू है से ओरिजिन आड़ को सैटिस्फाई ओरिजिन सैटिस्फाई है ओरिजिन आड़ को यहाँ आमर ड्र हम ओके गॉट इट बर्तमान ग्राफ ओटा लिभे की ग्राफटा लिखी ओरिजिन चेष्टा ओके राइट now the graph also will be in the first quadrant जेतु से x1 x2 greater than equal to 0 देजी सेतु फर्स्ट क्वाड्रेंट रे हबो ग्राफ so here it will be highest हमर 6 अछि ओके so 6 पर्यंत नबा हमें एपटे x टा एटा एटा y axis टा this is your origin okay so first of all 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 okay now the graph 2 1 x axis put 2 you put 1 now the point will be here 2 1 1 0 that 2 1 so the graph the line will be like this okay so मैं नाटा लिखी दूची -x1 plus x2 is equal to -1 the second one 6 0 sorry 0 6 and 6 0 this is the point आना डाला x1 plus x2 is equal to 6 एटा line 1 let it be एटा line 2 again अच्छा ए भितर मु शेडिंग देखो look at here शेडिंग टा एपटे जीवो एटा towards the origin टा एटा this is your origin तो एपटे एटा भी towards the origin एपटे आसीओ then x2 is equal to 5 x2 is equal to 5 third का x2 is equal to 5 कहले एटे the line will be parallel to x axis y axis पटे 5 नेबे 1 2 3 4 5 एटा this is the line okay x2 is equal to parallel to तो इटा भी towards the origin हबो इपटे राइट सो देखो पिले बर्तमान तीनटा जाक
लाइन टा ए भितरे हमर मिसिला मोटा टिके डार्क कर दउछ which is a pentagon type of हिला आमे आउ टिके भले की करि परिया एंती ए सब किछि न देखे करी खाली भी आमे एटा देखे परिया ओके इन सर्टेन बुक्स ए जाको किछि नथिबो खाली एटा हमर थिबो ओके बर्तन एटा हमर हला फिजिबल रीजन एटा हमर लाइन 3 so therefore o eta habo a eta habo b eta habo c eta habo d o a b c d is our feasible region आसी गला बर्तमान हमको पांचटा जाकर कोऑर्डिनेट काढियार अछि therefore coordinates of O 0 0 A देखा जाउची 1 0 B we have to calculate C we have to calculate but D टा हमरो देखा जाउची D this is your D y axis ऊपर अछि 0 5 okay now हमें का पे कैलकुलेट करिया बी और सी पे ओके नाउ फॉर बी बीटा इटा ए बीटा लाइन रो इंटरसेक्शन एटा हला लाइन 2 एटा हला लाइन 1 ओके सो बी इज द point of intersection between L1 and L2 okay L1 L2 हमें सॉल्व कर दो x1 plus x2 is equal to 6 minus x1 plus x2 is equal to -1 add this 2x2 is equal to 5 x2 is equal to 5 by 2 put this value here where x1 is equal to 7 by 2 do not make it fraction empty ega thau so what is the coordinate of b b ro coordinate hela 7 by 2 5 by 2 for c ta dekho pile ethi achi the point of intersection between L2 and L3 L2 and L3 अच्छा L2 टा बिले x2 is equal to 5 सेटा L3 रे पकई दियो L3 रे x1 plus x2 जगह रे केते पकई देबी 5 is equal to 6 therefore x1 is equal to 6 minus 5 is equal to 1 therefore what is the coordinate of C 1 5 remember एते L3 रे L3 टा हला हमरो L3 टा L2 टा हला L3 टा x is equal to x2 is equal to 5 एटा पड़ी गला ओके व्हाट इट हे गला तमरो तो फर्स्ट काम होला सेकंड ही गला ग्राफ हला फिजिबल रीजन आसी गला देन योर कोऑर्डिनेट्स तापरे once you have the coordinates then you have to replace the coordinate value in the objective function okay so move objective function रे एटा okay right
ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा हमको ऑप्टिमाइज z देछि तो सेहि पे हम खाली z लिखुछि ना z इज इक्वल टू minus 10x1 plus 2x2 z 0 0 za minus 10 into 1 plus 0 that is minus 10 zb minus 10 into 7 by 2 plus 2 into 5 by 2 minus 35 plus 5 is equal to minus 30 zc minus 10 into 1 plus 2 into 5 okay so finally 10 minus 10 0 and finally zd minus 10 into 0 then 2 into 5 10 so इथे बीटा वैल्यू गोटे मैक्सिमम वैल्यू आसिला 10 और मिनिमम वैल्यू आसिला minus 30 okay so here you have two values therefore z is maximum at d 0 30 0 5 therefore z maximum is equal to 10 x1 0 x2 5 this is one answer जदि खाली maximum कहि थंते हमें इटे सरी दिथांते now z is minimum at b that is 7 by 2 5 by 2 z minimum is equal to minus 30 x1 is equal to 7 by 2 y1 is equal to 5 by 2 okay this is the final answer got it बुझा पड़िला okay राइट किसी पिला करिकी पठेई चंती बहुत बढ़िया एंड आउ किसी अधिका पिला करके पठेले आउ बेटर हो ओके इट बी बेटर हमें आउरी करिया बिफोर गोइंग टू अनबाउंडेड जीवा पूर्व हमें गोटे आउ बाउंडेड रो कर दबा ओके we'll do one bounded completed मिटे भी एटा okay now we'll have another problem right now here it is z okay maximize z is equal to maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 minus 2x1 subject to
minus 2x1 plus x2 less than 1, x1 is less than equal to 2, x1 plus x3 is less than equal to 3, and x1 x2 greater than equal to 0. Okay, this is the question you have to solve, right? But then first changing the inequations to equations and solving it. So first of all, 2x1 plus x2 less than equal to 1, 2x1 plus x2 is equal to 1, x2 is equal to 1 plus 2x1. So accordingly तार टेबल टा हबो. Now put x1 is equal to 0, eta 1 habo, x1 is equal to 1, 2 1 2 plus 3 habo. Okay, second टा तो as it is, x1 less than 2, that means x1 is equal to 2, no table. Third टा x1 plus x3 is equal to, sorry, less than equal to 3, x1 plus x2 is equal to 3, then the table is x1 x2 at a 0 pakaile at a 3, at a 0 pakaile at a 3, 3 0 and 0 3. These are the table. Then origin test. देखो तीनटा देखो less than अच्छी, तीनटा all three are less than, therefore it is satisfy हो. Okay, बुझिला? Origin test. Since all three inequations are satisfying, origin, therefore the shading will be towards origin. अच्छा जी जानी पाउनी देखो एडे जदि 0 0 पकेबी 0 is less than 1, 0 is less than 2, 0 plus 0 is less than 3. तो तीनटा देखो हमरो satisfy हो, and the graph will be on the first quadrant. Okay, तो तन ग्राफ टे ड्रॉ करिवे. एटा मु लिखै दूची 0 1 1 3 मन रखि. Next number 3 अच्छी. This is your origin, x axis, y axis, 1 1 2 3. मु रिपीटेडली कहूची जाको इक्वल नबा 1 2 3. ओके, वी स्टार्ट. हमें केते नहीं थिले 1 0 हमरो थिला minus x1 plus x2 is equal to 1, x2 is equal to 1 plus 2x1 थिला. तो x1 रू 0 पकेले 1 आस्थिला, 0 1 गोटे आस्थिला, आ गोटे 1 3. ओके, बुझा पड़िला. So 0 1 it will be here, 1 3. Okay, the line will be eta amro
2x1 plus x2 is equal to 1, line 1. 1 3 1 3 टा जानिबा जदी जानि पाउने देखो x एक्सिस पटे 1 नि हला y एक्सिस पटे 3 नि हला जोटे मिसिला सेटा हला हमरो 1 3 देन आसिला x is equal to 2. So here it will be अच्छा आर शेडिंग टा टुवर्ड्स द ओरिजिन एपटे हबो x2 is equal to 2, this one, sorry, x1 is equal to 2. So इठी x1 टा x axis रे अछि, so it will be like this. The line will be parallel to, say previous question रे, it is parallel to x axis हेतला, it is parallel to line टा हला x1 is equal to 2. एटा मोन होछि L2. एटा हमें कैलकुलेशन करला बेले हमको एपटे हमर होबो सेटिंग जाको टुवर्ड्स द ओरिजिन, then 3003, this is your 03 and this is your 30. Towards the origin, this is your x1 plus x2 is equal to 3, let it be line 3. Okay, so the feasible reason is this one. इधे भी गोटे पेंटागन आसिला प्रीवियस क्वेश्चन बोला this one. जोटा फिजिबल रीजन आसीबो ताको हमें एंती डार्ट कर दवा. हमें एज आई टोल्ड यू हमको ग्राफ पेपर दरकार नहीं, हम आंसर शीट रे ही हमें करिवा. देयरफॉर एथि गला हमरो ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी is our feasible reason. Okay, OABCD is our feasible reason. But then once you have the feasible reason, तापर हमें coordinates बाहर कर दवा. Okay, coordinates of vertices O जଣା अछि A, this one will be 2 0 काहे कि x axis ऊपर अछि एटा 2 0 एटा this one right, एटा x axis ऊपर अछि सेति में एटा 2 0 होला. B we will calculate, C we will calculate, and D टा हमर होला 0 1. Okay, now for C, for B first of all, B टा आइटा L2 आउ L3 point of intersection L2 and L3. One is the advantage, L2 टा केवल गोटे नंबर, x1 is equal to 2, इति दीटा x1 plus x3 is equal to 3, x1 जगह 2 पकई देले, x3 is equal to 3 implies, sorry, x2 is equal to 1. Therefore what is the coordinate of B? 2 1. Now coordinate of C, for C this is the point of intersection between C theta L1 and L3. L3 अच्छा theta 2x1 plus x2 is equal to 1, x1 plus x2 is equal to 3.
माइनस कर दियो कैंसिल -3x1 इज इक्वल टू 1 - 3 - 2 x1 is equal to 2/3 and x2 is equal to 3 - 2/3 3 down 7/3. Therefore, what is the coordinate of C? 2/3 7/3. Okay, got it? 2/3 and 7/3. Now आसीगला आमर A B C D भल भाव लिखी दे B रो कोऑर्डिनेट हला 2 1 C रो कोऑर्डिनेट हला 2/3 7/3. ओके सो Z मैक्सिमम इज इक्वल टू ये दिया हितला हमरो Z मैक्सिमम टा दिया हितला we have 3x1 plus 2x2. ओके सो गोटे गोटे वैल्यू पकेबा आबे एटा मु ग्राफ टा लिखै दउची बुझा पड़ी जाई छि ग्राफ ओके z origin 0 plus 0 is equal to 0 ZA 3 into 2 plus 0 that is equal to 6 ZB 3 into 2 plus 2 into 1 8 ZC 3 into 2/3 plus 2 into 7/3 गुणे 14 3 गुणे 6 20/3 which is 6.6 ZD. This is only for comparison. Okay, ZD is equal to 0 plus 2 into 1 that is 2. So here ZB, therefore ZD is maximum at B that is 1. Z maximum is equal to 8 x1 2 and x2 is equal to 1. Okay, got it? बुझा पड़िला राइट एटा कंप्लीट कर दियो मु गोटे प्रॉब्लम बर्तन देबी सेटा मते करके पठेब ओके right now you have a question for you solve the LPP okay solve the LPP Z maximum is equal to x1 plus x2 subject to x1 plus 2x2 less than equal to 2000 x1 plus x2 less than equal to 1500 and x2 less than equal to 600 and x1 x2 easy ta achi for your convenient and practice I have given okay तो इटा हमरो आज जो बाउंडेड रो हमरो almost हमें कंप्लीट करले in the next class we'll do the
अनबाउंडेड सॉल्यूशन ओके थैंक यू आमे नेक्स्ट क्लास रे एटा पूर्व एटा हम करके पठेबा गुड डे।